Okay, we are starting today with the chapter number one of history, that is the rise of nationalism in Europe. Yesterday I said the PowerPoint presentation PPT with you. Have you gone through that? Yes. Mm, okay. Uh, in ninth class, we have studied about the French Revolution, the chapter. Maximum in this chapter, it covers the content of the French Revolution. We are starting with that. The first is the picture. Can anyone say about the picture? Who has drawn this? When? See, in 1848, Frederic Soreau, a French artist, prepared a series of four paintings visualizing his dream of world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of this series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of French Revolution performing liberty as a feminine figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the character of the rights, charter of the rights of a man in the other hand. That is about the Statue of Liberty. We have seen एक हाथ में उसकी मसाल है, दूसरे हाथ में एक बुकलेट है. उसमें वो क्या बताना चाहता है उसमें? On the earth, in the foreground of the image, lies the shattered minds of the symbols of absolute, absolutist institutions. In Soreus' utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time was already nation states. We will discuss on that. Overview of the chapter is there. In this chapter, what we are going to learn. This chapter will deal with many of the issues visualized by Soreyu. Who was Soreyu? Frederick Soreyu? Artist who prepared four French artist. series. Yes, French a artist. French artist. The concept of and practices of modern state in which a centralized power exercises sovereign control over clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one of the majority of its citizens and not only by its rulers. Who was the ruler of the France during the French Revolution? King King Louis Louis King XVI. Louis XVI. 16. King Good. Louis 16. Yes, Louis King Louis 16. came to develop a sense of community and shared history or descent. The French Revolution and the idea of a nation. Can anyone say, repeat what we have learned in the French Revolution? When was it started, or about anything about the French Revolution? Sir, it was French Revolution started was on started 7 in in 17 July 1789. Sir, 17 it July. was started on Four- 14 July. 14 14 July. July Yes, sir. 14 July, morning of 14 1789. July. Okay. Sir, it was because of the division of French society into three estates. Okay. See, there is a understanding of the chapter. This chapter deals with the French Revolution, the Revolution, 1830 to 1848.
unification of Germany and Italy, imperialism and colonialism. When the people are suppressed beyond tolerance, then the outcome cannot be other than a revolution, as it happened in 18th century France. The change of guard and rise of Louis XVI failed to change the fate of common man, so they had to fight for their survival. Who was the king? See, that was a painting of a King Louis XVI. King Louis 16. Louis Yes, 16. three states. Yeah, in the previous class, we have First, discussed first, second, and third. What third. does the picture shows? Third state, which comprise 95% of the French society, is working and paying all the taxes and everything. The first and second state are sitting on its back. The picture painting shows that. Yes, sir. A bloody revolution was inevitable as empty stomachs and the attitudes of the ignorant ruler pushed France to the point of no return. When women participated in the revolution, 5th October 1789 at Versailles. Let us witness the journey of France from French Revolution to the rise and fall of Napoleon. In previous class, it was there. Rise of Napoleon and the fall of Napoleon was there also. The French Revolution and nationalism. First expression of nationalism. First, before starting the chapter, before starting the introduction, what is nationalism? What is the idea of nationalism? क्या होता है nationalism? What is nationalism? Anyone can say. I am a nationalist. Why should I say that I am a nationalist? Or anyone we say that we are nationalist. What is that agenda of nationalism or nationalist? Anyone? The feeling of being united The feeling with of a being united with nation. nation. Okay. Anything else, Akansa? Maleka? Okay. The first expression of nationalism. Here it is there. First expression of nationalism. We'll now understand how nationalism gained momentum in European countries. The French Revolution is assumed as the first expression of nationalism in Europe. After the revolution, the French monarchy transferred its sovereignty to its citizens. It was proclaimed that people of France would shape their own destiny. The idea spread to other European countries as well. सबसे पहले in last class we have discussed that French Revolution सबसे पहले जो democracy कहीं पे establish हुई थी वो फ्रांस में हुई थी. The French Revolution set up the based on or the foundation of a democracy in the world. उसके बाद में ये idea spread हुआ across the world और पूरा यूरोप में. सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए किया गया था? बिकॉज ऑल द थ्री स्टेट्स वी हैव डिस्कस्ड. कैन एनीवन रिपीट व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज डन? क्यों हुआ था फ्रेंच? Sir, It was यस, because first state was because third state was giving all the taxes to the government and first two states enjoying their taxes. Due to that, there was so due to that ओके. एनीथिंग एल्स? sir, it the was first also and caused यस, कंटिन्यू. sir, it was also caused due to women's how women were treated in Yes, France. in France women was not treated equally in France. Okay. Monarchy was there actually 300 years. हमने एक आंसर लिखा था फ्रेंच में, फ्रांस में कब तक ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट थी? more than 300 years. And all the Yes. powers and decisions are in the hand of the kings, and they took decisions without considering the welfare of the peoples. Monarchy जो चाहता था वो अपनी policies वहां पे लागू कर देता था सारी चीजें.
सिटीजन्स के बारे में नहीं सोचता था, सिटीजन्स को कोई राइट नहीं थे। 95% पॉपुलेशन जब वहाँ पे फ्रांस की थर्ड एस्टेट में थी, सारा काम करते थे, सब कुछ करते थे, बट दे डू नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। किसी भी तरह की उनको कोई भी आजादी नहीं थी, कोई प्रिविलेज नहीं थे, वोटिंग अधिकार नहीं था, ये सारी चीजें उनके पास नहीं थी। सो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट हैड हैपेंड, कि जैसे हमने टेनिस कोर्ट ओथ, ये सारी चीजें आएंगी अभी भी इसमें आगे, फर्दर वी विल मूव। सो उसने क्या किया, मोनार्की से पूरे के पूरे पावर्स कहाँ पे ले लिए, सिटीजन्स के पास में आ गए। यहाँ पे उनने अपना एक पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन, उनने वहां पे गए थे टेनिस कोर्ट ओथ में, दे हैव टेकन ओथ, दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनने कसम खाई टिल दे ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे विल नॉट डिस्पर्स। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, दे हैव डिवाइडेड द राइट्स इक्वली टू द ऑल द थ्री स्टेट्स। सो यहाँ पे वही था, मोनार्की ट्रांसफर्ड इट्स सोवरेनिटी टू इट्स सिटीजन्स, प्रोक्लेम्ड दैट पीपल वुड शेप देयर ओन डेस्टिनी। लोग अपनी डेस्टिनी यानी व्हाट इज डेस्टिनी, किस्मत। अपनी किस्मत, अपना भविष्य खुद डिसाइड कर सके। ऐसा नहीं है कोई दूसरा ही डिसाइड कर रहा है उनके बारे में। जैसे थर्ड एस्टेट में अच्छे खासे बिजनेसमैन भी थे, डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, दे आर एजुकेटेड, उनके पास अच्छी खासी कमाई थी, बट उनके पास कोई भी एज दे आर बिलोंगिंग टू थर्ड स्टेट, वो किसी भी तरह की कोई भी प्रिविलेजेस या कोई गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी चीजें उनको नहीं मिल रही थी। यानी उनकी किस्मत कौन डिसाइड कर रहा था, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी किस्मत में डिसाइड कर रहे थे कि यू आर बिलोंगिंग टू थर्ड एस्टेट, सो आप लोगों को कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। सो अभी लोग जागरूक हुए थे और उनने क्या कहा था, अभी से हम ऐसा नहीं चलेगा और हम अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे, वी विल राइट आवर ओन डेस्टिनी। So this was the idea. Formation of collective identity. French people adopted a collective identity of la patrie and la citoyenne. Design of the former royal standard was replaced by the French flag. Now we will get familiar with the outbreak of the French Revolution with the help of an animation and how it influenced the nationalist and revolutionary trends of Europe. See, it is there. In 1789-80, French monarch of the old regime, King Louis XVI, was under great pressure to increase the taxes. Taxes in the French old regime could only be increased by calling a meeting of the Estates General. Representatives of the three estates of French society had to be present at the meeting. King Louis XVI decided to call the meeting of the Estates General in May 1789. This meeting was called more than 200 years after the previous Estates General of 1614 AD. The Estates General was attended by 300 representatives, each from first and second estates. Third estate, which comprised the newly arisen middle class, sent 600 representatives. This estate carried 40,000 letters outlining the demands of women, artisans and peasants who had not been allowed to come into the hall. In spite of its larger numbers, the third estate was given less importance, while the first and the second estates were seated face to face. Earlier, each estate was allowed one vote each, which brought a total to 3 votes. In this meeting, the third estate, inspired by Rousseau's social contract,
demanded one vote each for every one of the members of the Estates General. This gave 300 votes each to both the first and second estates, and 600 votes for the third estate, bringing the total to 1200 votes. King Louis XVI rejected the demands of the third estate, forcing them to walk out of the Estates General. Next month, the third estate gathered at a tennis court in Versailles, declared itself the National Assembly, and took the famous tennis court oath. The tennis court oath, which promised to make a new constitution for France based on demands of the third estate, was led by the noble Mirabeau and the priest Abbé Says. Meanwhile, the rest of Versailles was in turmoil. Bread prices had gone up, and women had started attacking hoarders and shop owners. The revolt became even more violent when the rebels stormed the castle of Bastille and released the political prisoners who had been confined there. Not far away, in the French countryside, peasants and villagers heard rumors that the rich lords intended to destroy their crops and fields. They took up arms and raided local manors. The carts containing the dues of the peasants were burnt by the mob. The noble lords and their families were forced to flee the country. Pressurized by the alarming conditions, King Louis XVI was forced to recognize the National Assembly as a legitimate organization. The revolution of the common people had shown its effect. Okay, what do you understand from the video? पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की इसमें कहानी सुना दी इसने. Yes. It was mainly caused due to the rejection of the demand of third estate by King Yes. Louis XVI. नियर अबाउट स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो ये किंग लुइस 16 के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था किस चीज के लिए, टू इंक्रीज द टैक्सेस. तो उसने मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में तीनों एस्टेट जनरल्स को मीटिंग बुलानी पड़ती है, तो तीनों एस्टेट के लोग वहां पे आकर इकट्ठे होते हैं. पहले एस्टेट के 300 लोग, सेकंड के 300, एंड थर्ड एस्टेट जो कि एमर्जिंग था, एमर्जिंग यानी अभी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे थे, डॉक्टर्स वहां पे थे, तो उनने अपना पावर दिखाना शुरू किया था. तो उन लोगों ने वहां पे कितने लोग भेजे थे? अपने 600 लोग भेजे थे, विद 40,000 लेटर्स ऑफ वुमेन्स, पेजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसियंस. उन सब के 40,000 लेटर वो लेकर आए थे कि उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, उनको क्या डिमांड्स है, उनकी टैक्सेस कम किए जाएं, ये सारी चीजें उनमें लिखी हुई थी. बट उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था. फिर क्या हुआ, आगे क्या बताया इसमें? फिर बाद में उन्होंने वो झगड़ा वो सब किया. झगड़ा यानी रेवोल्यूशन तो बाद में आया, रिवॉल्यूशन किया. थर्ड एस्टेट के ऊपर, उस मीटिंग में थर्ड एस्टेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया था. फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सामने सामने, दे आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर एंड दे आर डिस्कशन. और पुरानी 1 मिनट, आई एम नोटिंग यू. पुरानी नीति के अनुसार वहां पे क्या था कि 3 वोट्स होते थे, फर्स्ट एस्टेट का 1 वोट, सेकंड एस्टेट का 1 वोट एंड थर्ड एस्टेट का 1 वोट. तो टोटल कितने वोट हुए? दे आर 3 वोट्स. सो अभी न्यू उसमें जब 200 साल बाद में फिर से ये मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें थर्ड एस्टेट के लोग जो कि एजुकेटेड थे, ये सारी चीज थे, वो अपने अधिकारों को चाहते थे और उनने एक आवाज उठाई कि वोटिंग जो है वो, उसको जो दायरा है वो सबके लिए इक्वल किया जाए, यानी यहाँ पे जितने भी बैठे हुए सब लोग वोट करें. यानी
300 लोग फर्स्ट एस्टेट के आए थे, 300 सेकंड के थे, 600 थर्ड एस्टेट के। 300 300 600 600 ये थर्ड एस्टेट के 1200 वोट्स हो गए। तो 12 अभी यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी आएगी। बट किंग लुइस 16 हैज रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ थर्ड एस्टेट, और उनको मजबूर किया कि आप लोगों की कोई भी डिमांड नहीं सुनी जाएगी। तो एंड थर्ड एस्टेट को उस मीटिंग से निकाल दिया। उसके बाद में क्या हुआ, हमने पहले भी पढ़ा था, दे गैदर्ड इन द टेनिस कोर्ट, और वहां पे उन्होंने अपने आप को क्या किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, एंड दे स्वेयर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस। Again, you want to see that this video? Yes or no? Yes, Ikra? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Yes, sir. Just ध्यान से देखना है इसको अभी। In 1789-80, French monarch of the old regime, King Louis XVI, was under great pressure to increase the taxes. Taxes in the French old regime could only be increased by calling a meeting of the Estates General. Representatives of the three estates of French society had to be present at the meeting. King Louis XVI decided to call the meeting of the Estates General in May 1789. This meeting was called more than 200 years after the previous Estates General of 1614 AD. The Estates General was attended by 300 representatives, each from first and second estates. Third estate, which comprised the newly arisen middle class, sent 600 representatives. This estate carried 40,000 letters outlining the demands of women, artisans, and peasants who had not been allowed to come into the hall. In spite of its larger numbers, the third estate was given less importance, while the first and the second estates were seated face to face. Earlier, each estate was allowed one vote each, which brought a total to 3 votes. In this meeting, the third estate, inspired by Rousseau's social contract, demanded one vote each for every one of the members of the Estates General. This gave 300 votes each to both the first and second estates, and 600 votes for the third estate, bringing the total to 1,200 votes. King Louis XVI rejected the demands of the third estate, forcing them to work out of the Estates General. Next month, the third estate gathered at a tennis court in Versailles, declared itself the National Assembly, and took the famous tennis court oath. The tennis court oath, which promised to make a new constitution for France based on demands of the third estate, was led by the noble Mirabeau and the priest Abbé Sayes. Meanwhile, the rest of Versailles was in turmoil. Bread prices had gone up, and women had started attacking hoarders and shop owners. The revolt became even more violent when the rebels stormed the castle of Bastille and released the political prisoners who had been confined there. Not far away, in the French countryside, peasants and villagers heard rumors
that the rich lords intended to destroy their crops and fields. They took up arms and raided local manors. Records containing the dues of the peasants were burnt by the mob. The noble lords and their families were forced to flee the country. Pressurized by the alarming conditions, King Louis XVI was forced to recognize the National Assembly as a legitimate organization. The revolution of the common people had shown its effect. Okay. French citizens elected the members of the Estates General. They also renamed the National Assembly. They composed new hymns for France. People who became martyrs during the revolution were given honor. Okay. This picture last time you had drawn in your notebook also. एक लास्ट में पिक्चर था उसमें जो पॉलिटिकल सिंबल्स थे. याद है किसी को ये क्या कौन सी पिक्चर थी? Yes, sir. एक्सप्लेन. कौन सी थी? व्हाट इज सर एक कैप थी, क्या नाम था उसका? फिरेगियन कैप. सर वो दिस पिक्चर Red. हाँ लास्ट सर, वाला Sir, एकदम this is वो कैप. Sir, the sir. eye This of is of colors, blue, red, the France colors of map. लास्ट में एक और था सिटीजन चार्टर करके. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस. सर वो लॉ प्लेट. हाँ, वो लॉ प्लेट. यस, लो प्लेट. याद आया? इसमें Yes, सारे yes, के sir. सारे राइट्स इसका लिखे गए थे capture भी था सिटीजन्स के. यस, सारे राइट्स लिखे गए थे इसमें. और ऊपर वो दिस पिक्चर, हाँ. उसमें वो बताया था कलर्स ऑफ द फ्रांस और ये वहां पे वो सारी चीजें थी उसमें. बट सिटीजन टैबलेट वाज देयर, लो टैबलेट जिसे कहा गया था. तो स्टेट जनरल सिलेक्टेड बाय द सिटीजन्स. नाउ अभी उसके बाद में जब उनने अपना वो कर दिया, खुद की असेंबली डिक्लेयर की, उसके बाद में अभी क्या होने लगा, जो अभी तक जो मीटिंग बुलाते थे जनरल्स, स्टेट जनरल्स, वो अभी कौन इलेक्ट करने लगे? इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स. उससे पहले कौन इलेक्ट करता था? इट इज इलेक्टेड बाय द मोनार्क. renamed the National Assembly. They renamed the National Assembly. They composed new hymns and a revolution के टाइम पे जितने भी लोग मरे थे, उसमें मरे थे, उनको अवार्ड दिया गया था या ऑनर दिया गया था. मार्टर्स, उनको शहीद कहा गया था. शहीद का दर्जा उन लोगों को दिया गया. Yes. Answer the below given question. The year in which the French Revolution took place was. Your options are A. 1889, B. 1789, C. 1788, or D. 1776. Yes, answer. Sir, B. 1789. 1789. Okay, 1789 AD. Okay. On language. Now let us explore the various factors that supported nationalism in France. French as a language was encouraged in France. A uniform law for all citizens was developed after the revolution. People were asked to abolish internal customs and duties. A common system of weights and measures was adopted in France. Yes. फ्रेंच एज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के तौर पर उसको एनकरेज किया गया बहुत ज्यादा. एक्सिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म लॉज फॉर द सिटीजन्स, सब लोगों के लिए, जितने भी सिटीजन्स हो, चाहे वो फर्स्ट स्टेट के हो, सेकंड के हो या थर्ड एस्टेट के हो, सबके लिए इक्वल राइट्स और सबके लिए इक्वल लॉज हो, ये वहां पे किया गया. एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज. इंटरनल कस्टम्स, उनके जो भी वहां चलते थे कस्टम्स थे और उनके जो ड्यूटीज थी, उन सारे में पहले वाले को खत्म करके न्यू जो थर्ड एस्टेट वाले लोग चाहते थे उनमें एंटर, वो भी वो उसमें हिस्सा बन सके, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. एडॉप्शन
to a common system of weight and measures. ये एक क्वेश्चन भी था नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ, रिमेम्बर? Yes, sir. किसने किया था ये एडप्शन? Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. ओके. The feeling of nationalism was spread in all the European countries. Jacobin clubs were set up in France by the students and the educated middle class. Nationalism was the factor that French army could now move to Holland, Belgium, Switzerland, and Italy. ये सेकंड वाली पीपीटी दी है जो इंग्लैंड का एक और था, मैंने 2 पीपीटी शेयर की थी आपके साथ, देखी थी? हैव यू सीन दैट? Yes. वो सेकंड पीपीटी Yes. का है ये वाला, वो उस पे फर्दर डिस्कस करेंगे हम फिर से. The French Revolution brought the end of Bourbons, but at the cost of a dictator, Napoleon Bonaparte, who brought significant changes in European political arena. The rule of Napoleon, became a monarch of France, occupied large territories in Europe, brought about administrative changes which rational and efficient. जहाँ पे भी उसने अपने पड़ोसी देशों के ऊपर जो कब्जा किया था, उसमें उसको हमने पिछले साल भी पढ़ा था, किसको सेटअप किया था? अपने फैमिली मेंबर्स को, वहाँ का Family members. राजा या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, और उसको वो देखता था वहां से. He demolished the feudal and manorial system to bring rational changes in the life of common man. He set a rule where all people were equal before law. People were given roof over their head, food for life, and liberty for mind. Yes, in last class also we have discussed कि उनका रूल ये माना जाता था, रीएस्टेब्लिश तो किया था उन्होंने मोनार्की, बट उसने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा काम किए थे, और वो जनता के लिए अच्छे साबित हो रहे थे. बट वो हारे थे, वो किस लिए? वोटरलू के उसमें बैटल में हारे थे, वो आउटर जो लड़ाइयां कर रहे थे उसके कारण. सो व्हाट ही डिड, द कोड ऑफ नेपोलियन डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. जो पहले से प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के, वो सारे प्रिविलेजेस इन्हें खत्म कर दिए थे. और क्या किया था कि he had declared that all the citizens, whether he is belonging to first state, second or third, are equal in the eye of law और equal before the law. उसमें कोई भी डिफरेंस, भेदभाव नहीं किया जा सकता. Established equality before law, secured the right to property. जो प्रॉपर्टी है लोगों की, वो उनकी खुद की है, उनका अधिकार उनके पास ही रहेगा. सब लोगों के पास घर होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए फार्मर्स के पास, ये सारी चीजें उनने वहां पे दी थी. एक्सपोर्टेड टू द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इटली. We will now get familiar with the code of law with the help of the following diagram. First, abolishing the feudal system, simplify administrative divisions. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या होते हैं? जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको सिंप्लीफाई किया गया. रिमूविंग मोनेरियल ड्यूज, रिमूविंग गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, improving transport and communication. Napoleon's work in other regions. Now let us study about the influence of Napoleon on European countries. Feudal system was abolished by Napoleon in the Dutch Republic, Switzerland, Italy, and Germany. He had introduced standardized weights and measures and a common national currency. तो करेंसी के पिक्चर दिया हुआ है उसने. फ्यूडल सिस्टम, मोनार्क, जो राजाशाही या ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा था, उन सबको खत्म किया. और उनने कहाँ पे? दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में भी, डच में, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी में भी उनने वो स्टेब्लिश किया. He had introduced new weight and measures, standardized, जो सब लोगों, सब जगह पे उसको एक इक्वली मापा जा सके, इक्वली तौर पर उसको अडॉप्ट किया जा सके. He had done, and the common national currency he had established. Reaction towards Napoleon.
It was the effect of Napoleon that French army was welcomed in Holland, Switzerland, and in cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw. But later this welcome note was turned into hostility. Increased taxation, censorship, and forced conscription into the army were the cause for the hostility between these countries. सबसे पहले जब वो अपने आर्मीज को वहां पे भेजने लगा, स्टार्टिंग में तो नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत जगह स्वागत हुआ था, सारी चीजें पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट्स पॉलिसीज, और ये सारी चीजें उनका बहुत स्वागत किया गया था। लेटर जैसे जैसे उनका आर्मी इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई, आर्मी के कारण जितने भी वो थे टैक्सेशन, बड़ी आर्मी के लिए टैक्सेस इंक्रीज करना, उनकी पूरी नीड्स सर को वो पूरा करने के लिए। यस, फ्रेंच के सभी घरों में जाकर के बोलता था कि तुम्हारा एक कोई मेंबर फ्रेंच आर्मी में होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए उसने टैक्स बढ़ाया था ना। हाँ, टैक्स उसमें हर एक मेंबर्स को जितने, क्योंकि उसको कॉन्कर करने थे अपने पड़ोसी देश को भी, तो जितनी बड़ी आर्मी होगी उतना ही उनको फायदा मिलेगा। सो फ्रेंच सोसाइटी से हर एक घर से वो एक तो मेंबर्स ले रहा था, दूसरा उनका सारी चीजें, उनका खर्च, आर्मी का खर्च, क्योंकि जितनी बड़ी आर्मी होगी खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। सो उस खर्च को पूरा करने के लिए अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था टू इंक्रीज द टैक्सेस। अगेन, अगर कहीं पे भी कोई भी देश हो जहां पर अगर लोगों को ऊपर टैक्सेस का भार ज्यादा बढ़ेगा, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, लोग उनके खिलाफ जाना स्टार्ट कर देंगे। अगर सी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे देश में भी अभी अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्रीज कर दे, एकदम से अचानक से टैक्सेस इंक्रीज कर दे टू बिल्ड द आर्मी, आर्मी को मॉडिफाई करने के लिए, सो आम लोग गवर्नमेंट का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? दे विल श्योरली, क्योंकि जेब से रुपए हमारे जा रहे हैं, तो हम लोग तो उसका विरोध करने वाले हैं। सो ऐसे ही हुआ था, क्योंकि लार्ज आर्मी बढ़ती जा रही थी, सो टैक्सेशन वाज इंक्रीज्ड। सेंसरशिप, सेंसरशिप ये हो गया, जैसे अभी कोई भी चीजें लोगों को ना पता चले, नहीं बतानी हो, तो सेंसरशिप वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। आर्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें, इन सब की जो रिपोर्ट्स जाती थी, सूचना मिलती थी लोगों को, वो सारी चीजें लोगों को बताया नहीं जाता था। एंड फर्स्ट conscriptions into the army was the cause. Answer the following question. The Code of Napoleon was implemented in a year. Your options are A. 1802, B. 1804, C. 1805, or D. 1806. 1804. Sure. Yes. Yes, the Code of Napoleon was implemented in 1804 AD. Now, the fall of Napoleon. Retreat due to the cold, bitter winter As in the rule Moscow. of the nature is, what goes up will certainly come down. So was the fate of Napoleon. Napoleon had to retreat due to the cold, bitter winter in Moscow. An alliance against France was formed by Britain, Russia, Austria, and Prussia. जैसे अभी इसने बताया कि नेचर का रूल है, जो जितना ऊपर जाता है वो उतनी ही जल्दी गिरता भी है। सो एक तो वो अपनी आर्मी को वो लगातार वो लड़ाई के लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज में भेज रहा था। तो आर्मी में भी उसके खिलाफ एक वो हो गया था, विद्रोह सा हुआ था कि रिट्रीट ड्यू टू मॉस्को, जब रसिया में वहां पे उनको भेजा गया था आर्मी, तो वहां की ठंडी वो लोग सहन नहीं कर पा रहे थे और ज्यादा दिनों तक रुकने के लिए। दैट वाज द रीजन। सेकंड, अलायंस। अलायंस यानी लोग दूसरे अलग अलग देशों की आर्मीज या अलग अलग देश उस नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ एकजुट हो गए। कौन से वो देश थे? ब्रिटेन था, रसिया था, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। वो सारे लोग इसके अगेंस्ट में इकट्ठे हो गए। दे फॉर्म्ड एन आर्मी, इंडिविजुअल आर्मी। Napoleon was defeated in 1815 and the Bourbon rule was restored. He had to face the wrath of Britain in the form of exile to Elba. 1815 में उसकी डिफीट भी थी। कौन सी बैटल में, कहाँ पे भी थी?
In Waterloo. In 1815. Waterloo. In Waterloo. 1815 in Waterloo. Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the battle in Leipzig in 1813. Each letter dropping out his bag bears the names of the territories he lost. ये एक पिक्चर बनाई थी, उसमें जितनी जितनी टेरिटरीज वो अब हारने लग गया था, कितनी टेरिटरीज वो लूज कर रहे थे, उसके बैग में से वो टेरिटरीज की वो एक लेटर्स के फॉर्म में, चिट्स के फॉर्म में वो गिरते जा रहे हैं. Napoleon escaped from Elba to rule for another 100 days. People welcomed the hero, but not the dictator. He reformed the constitution. अगेन नेपोलियन ने सेकंड ट्राई किया. नेपोलियन एस्केप फ्रॉम एल्बा 1813 में वहां से एस्केप हुआ, निकला, एंड अगेन ही रूल्ड एज फॉर 100 days. पीपल वेलकम्ड द हीरो बट नॉट द डिक्टेटर. उसको वो लोग अपना हीरो मानते थे, अभी भी उसका इज्जत करते थे, अपना रोल मॉडल मानते थे, बट दे आर नॉट accepting them as a dictator now. He fought few battles until he was imprisoned and sent to the island of Saint Helena to wait for his end. Last battle, as we know that he 1815 में वो हारा था वॉटरलू में, और उसके बाद में उसको जेल में भेज दिया गया, imprisoned and sent to island of Saint Helena, and there he died in 1821. The painting was prepared, Napoleon on Saint Helena. The age 342. Again, tomorrow we'll continue with this chapter. Now just 3 minutes are left. Actually, बंद हो जाएगा. So in the evening, later evening, again मैं इसके भी ऊपर ये आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, गो थ्रू दैट वीडियो लिंक, देख लेना उसको. Also, I am sending important points for revision today only है. आज भेजूं या कल भेजूं उसको? सर आज भेज दीजिए. सर आज. Okay, I am sending that. वो बेटा आपको प्रिंट निकाल के रखना है. Just I will send that. Go through that and keep it safe. Tomorrow we are starting with the age of revolution in 1830-48. Again यहीं से हम continue करेंगे इसको. Okay, bye. बाय Bye, सर. sir. Bye. Bye, sir. Bye बेटा.